a basic class, methods, and the basic data types, right? So now, today what we will do is we will build upon that. We will focus a bit more into more advanced concepts, right? So before that, what do you guys think are the things we can do with the basics? So we have, say, all of these are individual, right? So which means one variable has one value, right? But what if we have requirement where we need to say modify multiple data points together? Okay, so you're getting it? What I'm mentioning? That you need to not handle, say, one integer at a time, but say you need to handle 10 integer at a time. Right. So that is the first scenario which we will be covering. Okay. So obviously, when you have multiple, instances of data, तो normally what do? आपके पास जब कोई एक चीज होती है एक एक करके लिखते हैं, और जब मल्टीपल चीजें होती है तो आपको लिस्ट डाउन बनाना पड़ता है, राइट? कि say 1 2 3 4 and 10 items you have. So what you will do is you will create a list, right? So that same thing logically we want to do in code, right? So for that, what we have is a list class inside Salesforce. Okay. So पहले से आपको एक क्लास बनी हुई है, लिस्ट क्लास है, और वो क्लास क्या करती है, आपको डेटा सीक्वेंस में ऐड करने देती है कि आप एक ही नहीं, आप मल्टीपल डेटा एक साथ रखो. बट देर इज ओनली वन कंस्ट्रेंट यू हैव टू थिंक ऑफ, कि आप जब लिस्ट बना रहे हो तो इन कोड इट कैन बी ऑफ वन टाइप. Like I can't create a list of say 5 integers and say 3 decimals. Okay. Or say 2 integers and 2 booleans, or maybe booleans or strings. Together you cannot keep different data types together. So you only can keep one data type at a time in a list. So let's begin with just the basics. So say I have a scenario that I want some operation जो मुझे 10 numbers पे करना है एक साथ, right? तो अब मैं क्या बनाऊंगा, हम लोग नंबर का एक लिस्ट बनाएंगे. तो सिंटैक्स क्या होगा, कोड में क्या लिखना पड़ेगा, वो हम पहले देखेंगे. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो फर्स्ट आई राइट से लिस्ट, वेरिएबल का कुछ हम नाम दे देते हैं, नंबर्स लिस्ट, राइट. नाउ अभी मैंने आपको पहले क्या बोला था, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि लिस्ट इज अ क्लास, राइट. ओके, दिस इज द डीबग वन. फाइन. सो अगर मेरा, हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर मैं डेमो क्लास का मुझे कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, राइट, डेमो क्लास obj is equals to न्यू डेमो क्लास. ये हमारा सिंटैक्स था जो हम फॉलो कर रहे थे, राइट. सो यू हैव टू रियलाइज ऑल ऑफ दिस फ्रेमवर्क्स आर सेम. सेल्सफोर्स में आप कहीं पे भी अगर कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है आपको, तो दिस इज द सिंटैक्स यू फॉलो, राइट. सो देन एज आई टोल्ड यू, लिस्ट इज आल्सो अ क्लास. देन आइडियली the syntax of list should also be list numbers list is equals to new list, right. लॉजिकली बोथ ऑफ दीज आर सेम. क्लास है, ऑब्जेक्ट का नाम दिया मैंने वेरिएबल, न्यू कीवर्ड को हमने यूज किया, और बाद में फिर क्लास का नाम. इज दिस करेक्ट और नॉट? Yes, sir. राइट. सो तो आप ये कॉन्सेप्ट को समझना कि कोडिंग प्रिंसिपल अगर आपका कुछ क्लियर हो जाता है तो आप अक्रॉस लैंग्वेज वही यूज करें. नाउ दिस लुक्स करेक्ट, लेकिन एक चीज अभी हमको इसमें और भी ऐड करनी है.
क्या ऐड करनी है? लेट्स गो टू द प्रॉब्लम। ये मेरे को जस्ट देखो एरर्स दिखा रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन नंबर्स लिस्ट इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट। मतलब ये बोल रहा है बेसिकली इस लिस्ट के बाद दिस इज समथिंग विच इज इनवैलिड, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। एंड व्हाट इज इट शोइंग मी दैट दिस ब्रैकेट आफ्टर दिस इज आल्सो इनवैलिड, ये भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ और होना चाहिए इन दोनों के बीच में। एंड व्हाट दैट इज व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू, कि हम जब लिस्ट बनाते हैं तो हम किसी एक टाइप का बना सकते हैं, राइट? आइदर आई कैन मेक इंटीजर्स या डेसिमल या बुलियन का बना सकते हैं, राइट? बट यहाँ पे क्या हमने अभी डिफाइन किया है कुछ कि कौन से टाइप का होगा? अगर मैं से यहाँ पे एक और वेरिएबल बना देता हूँ नंबर्स लिस्ट 2 एंड आई से चलो एक मेरा इंटीजर है, एक मेरा से स्ट्रिंग है, तो ये क्या फर्क कैसे पता चलेगा? तो वी हैव टू प्लेस समवेयर जिससे पता चलना चाहिए कि ये भाई नंबर का स्ट्रिंग है। सो दैट इज व्हाट इज मिसिंग हियर बिटवीन दिस एंड दिस, जिसकी वजह से आपको नंबर्स लिस्ट का एरर आ रहा है। लेट्स चेक। सो व्हाट आई वांट इज अ लिस्ट ऑफ इंटीजर। लेट्स ट्राई टू सेव। सी, नंबर्स लिस्ट वाला एरर हट गया, राइट? लेट्स डू द सेम हियर। इंटीजर, दोनों एरर हट गए। हमने यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था लिस्ट का, उसको भी बता दिया कि ये इंटीजर का लिस्ट बनाना है, और हमने वेरिएबल का टाइप भी ठीक से डिफाइन कर दिया कि ये इंटीजर का लिस्ट है। लेट्स ट्राई द सेम फॉर स्ट्रिंग। दिस साइड आल्सो स्ट्रिंग। नाउ यू सी इट विल सेव। अब जाके कंपाइलर को फर्क पता चल रहा है कि नंबर्स लिस्ट मेरा नंबर का लिस्ट है। इट विल हैव ओनली इंटीजर वैल्यू and this will only have string value, right? So this is what we have now set. तो आपको लिस्ट बनाने का लॉजिक समझ आया? इट्स सेम एज क्लास का ऑब्जेक्ट हमको जैसे बनाना है, हमने लिस्ट का भी एक ऑब्जेक्ट बनाया है। द ओनली थिंग इज लिस्ट बनाते वक्त हमको बताना पड़ता है किस टाइप का लिस्ट है, इसलिए एक टैग हमारा ऐड हो जाता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? यस और नो? Yes, sir. गुड। नाउ अब हमने लिस्ट तो बना दिया, लेकिन अभी ये क्या है, इसमें तो कोई वैल्यू हमने डाला कहीं से एक्सप्लिसिटली? कोई वैल्यू तो हमने डाला नहीं। So this is a blank list right now, कि खाली एक लिस्ट हमने बना के रखी। So now what we'll do is I'll just open something and step by step we'll go through this, right? Just open it, and so let me know if you guys can see this tab that I have just opened. Yes, sir. Yes, sir. It's visible. Right? So now we will go step by step with the methods. Right? Leave these constructors for now. We won't be focusing on constructors. Let's go to the methods. Now we will walk through all of these methods one by one. What is the first one? Just add. हम अपने इस मेथड के अंदर हम वो सब मॉडिफाई करेंगे, राइट? तो हमने नंबर लिस्ट तो बना लिया। सो लेट्स ट्राई दिस नंबर्स लिस्ट। ओके, जस्ट shorten this one because I have to type multiple times, right? So let's try and list dot add. Now this list is of integer type, so I can only add a value here which is an integer. So let's add 100. Right? Let's print the list now. Debug.
and this. Here. What is happening? Why is it not getting this? Where is it getting stuck? Okay, I did not create this as a method, is it? Okay, so this is actually, we have created a static. Oh, fine. Now save. All right. Now, what I have done is, मैंने ये end list को लिया यहाँ से एंड उसके अंदर मैंने ऐड किया 100. उसके बाद हम इसको प्रिंट करेंगे. Let's do the same thing once more. This time we'll add 200 and again this time we'll add 300 and instead of number integer, let's add a decimal. Sorry, decimal, it will convert. Yeah. So you see what is happening. Method does not exist or incorrect signature void add decimal from the type list. क्योंकि हमने क्लास का टाइप इंटीजर दे दिया है तो डेसिमल वो हमको ऐड करने नहीं देगा. लेट्स डू द सेम थिंग विथ बूलियन. बूलियन भी ऐड करने नहीं देगा. Right. So this is why once you set a type, you can only add variables of that kind, value of that kind into this code. तो अभी हम चलो इस मेथड को कॉल करते हैं. और अभी मैंने क्लास का स्टैटिक हटा दिया है मेथड का, तो हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. क्लास then display text, right? Let's execute this. What was the method? Oh, we need to have, okay, we had parameters. Okay, let's add that. Actually, leave it. We don't need last time's class. Let's remove this parameter का part हमको भी चाहिए नहीं. Result भी हमको चाहिए. Right. तो बेसिकली हमको वेरिएबल्स चाहिए नहीं तो हमने हटा दिया उसको. Now we'll run. Stack depth. How come? Okay, let's remove this for now. Keep it within the method. Okay. And इस लाइन को हम मेथड के अंदर अभी के लिए पुल करते हैं. बेसिकली क्या हो रहा है, वो क्योंकि ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करने की कोशिश कर रहा है, so that is causing a problem. That it is going to, that limits the error you saw, right? Just keep this in mind. We will focus specifically on limits. Why is this failing still? This should not be failing. Tag depth reach. Okay, just
Let's just run it here. हम कोड को यूज करेंगे. Right. So, see, each time I'm running the code, that list add is running and the value is getting put into the list, right? So this is your most basic function. This function you all will probably be using a lot actual projects में, क्योंकि वहाँ पे lists बहुत use होता है. Like if I go through classes right now, like एक एक क्लास में हम लोग को like 10-15 लिस्ट बनाना पड़ता है. क्यों बनाना पड़ता है उसको भी हम देखेंगे, but list is something you use a lot and list add is one of the most basic function that you will always use, right? Now once I have added, right, so this clears our add function. Now you see a few other functions here also. We'll go through the ones which are used most. Okay, so what is this? Add index list element. Let's go with our example only. Focus that much on that side. अब मेरे पास जो लिस्ट क्रिएट हुआ उसके अंदर मेरा 3 एलिमेंट्स हैं. I'll just show you better way, right? So what does my list has? First element is 100, second element is 200, third element is 300. तो ये मेरा एलिमेंट का काउंट कितना हुआ? 3 एलिमेंट हुआ. फर्स्ट एलिमेंट इज 100, 200 and 300. But there is something in Salesforce, in basically most programming languages, where जब ये लिस्ट में डेटा स्टोर होता है तो दैट इज स्टोर्ड इन काइंड ऑफ, इमेजिन ऑफ इट लाइक ऐसे सीक्वेंस में आपके पास बॉक्सेस हैं, राइट? एंड ईच बॉक्स हैज एन एड्रेस इन कोड. ओके, so the address of the first box is actually 0. The address of the second box is actually 1. And the address of the third box is actually 2. So this is how it starts. I'll give you an example. If I write here system.debug, right, enlist.get. Okay, before we should have gone with get method first, but it is fine. Right, enlist.get 0. Let's see what comes. अभी इनको हम कमेंट करके रखते हैं. So you see, enlist got get 0 में हमारा क्या आया? 100. ओके, मतलब मेरा जो एक्चुअली फर्स्ट नंबर था जो 0th इंडेक्स पे है वो आया 100. So if I write 2, what should be coming? So you see that index is what we have as reference. तो आप लिस्ट से अगर कोई वैल्यू निकालते हो तो वो आप निकालोगे यूजिंग द इंडेक्स. नाउ लेट्स गो बैक टू द मेथड. मेथड हमारा क्या बोलता है? लिस्ट में आप ऐड करो, पहला एलिमेंट डालो आप इंडेक्स, दूसरा एलिमेंट डालो आप लिस्ट एलिमेंट. So now let's go to our code again. Now what I want is, अब मेरा 2 पे लेट्स मॉडिफाई, तो मेरा 1 पे क्या आएगा? अगर मैं यहाँ पे english.get1